कोर्स में बेसिकली जो इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास होती है वो हमेशा इंटरैक्टिव होती है। इंटरैक्टिव का मतलब होता है इंगेजिंग, you interact, you communicate with each other in order to improve your English language, क्योंकि English language जो है वो हम बुक्स से नहीं improve कर सकते। ये कोई बुकिश नॉलेज नहीं होता कि एक किताब सामने आप रख लें और उसकी क्रैमिंग स्टार्ट कर दें और आप फिर लैंग्वेज पे जो है वो आपकी कमांड हो जाएगी, और that this is not what improving English language is। English language improve करने के लिए आपको communicative होना होता है। ये क्लास SST बेस्ड है, ये मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है SST बेस्ड। SST का मतलब होता है स्टूडेंट टॉक टाइम। क्लास में स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो डिफरेंट तरीके से होती है। आइदर यू कैन पार्टिसिपेट इन द मेन लाइव सेशन, व्हाट्सएप ग्रुप इज 100% एक्टिव वेयर यू आर गोइंग टू सबमिट योर असाइनमेंट्स। आपकी डिफरेंट असाइनमेंट्स होती हैं जो कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग से रिलेटेड होंगी। उन असाइनमेंट्स को आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे, वो मैं आपको तरीका बता दूंगी दैट व्हाट यू टू डू फॉर दैट। So basically your class is a student centered class where you are the important and the most important factor। आपकी learning हो रही है, मैं यहाँ पे आपको different tips, tricks और tools बताऊंगी हर रोज। Every day in every session you will get to have an idea that how you have to improve your reading। कहीं reading की practice हो रही होगी, कहीं listening की हो रही होगी, कभी writing की हो रही होगी और कभी speaking की हो रही होगी। Basically, this course is going to focus on your writing skills, but all the other 4 skills will be discussed and will be practiced। मैं आपको बताती हूँ कि जो 4 skills हैं उनका आपस में connection क्या है। So ये आपका active होना बहुत important है। Passive का क्या मतलब है? Passive, silent, not responsive। अगर आप silent रहेंगे, why are you not able to listen to my voice? Please check your microphone। प्लीज चेक योर माइक्रोफोन। अपनी जो माइक्रोफोन की जो आपकी वॉइस जो इसकी सेटिंग्स है माइक्रोफोन की, उनको चेक करें प्लीज। सो जो आपकी लर्निंग है वो वन साइडेड नहीं होती, इट इज टू साइडेड। इसमें हम वोकैबुलरी कवर करेंगे, प्रोनाउंसिएशन होगी, और ये जो हाईलाइट किया हुआ है मैंने, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों यहाँ पे आपको इन डेप्थ फीडबैक मिलेगा, डिटेल्ड फीडबैक। आपको ये असाइनमेंट सबमिट करेंगे, उसमें मैं आपको राइटिंग से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड, स्पेलिंग्स, listening में pronunciation, high and low pitch, your voice, how much you need to improve, reading में if you're given any assignment, how you have to, what are the tips that you have to follow in your reading skills, in your speaking assignments you are going to get assignments for speaking skills, and I'm going to give you detailed feedback। ordinary feedback नहीं होगा कि okay yes assignment is fine or no assignment is not fine। this is not the feedback। फीडबैक इज जिसमें मैं आपके सारे स्ट्रक्चर्स, एक्सप्रेशंस, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग्स, पंक्चुएशंस, राइटिंग के जो रूल्स हैं, स्पीकिंग के जो रूल्स हैं, प्रोनाउंसिएशन है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। सो टुडे यू विल गेट योर फर्स्ट असाइनमेंट एंड बाय द एंड ऑफ दिस सेशन और आपको आइडिया हो जाएगा व्हाट वी आर गोइंग टू लुक इनटू इन दिस सेशन। हम क्या क्या एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। ग्रामर है, आपके 4 स्किल्स हैं, टेंसेस हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन, paragraph, essay, email, précis, all kinds of writing, formal, informal writing, active and passive voice। अगर कोई टॉपिक है जो कि आपके माइंड में है और वो यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ हुआ, just share it। Either you can share it in the live chat now, या फिर आप WhatsApp ग्रुप में राइट कर दें कि जी ये वाला टॉपिक we want to cover and I'm going to prepare a full-fledged session for you that will be of 30 minutes और उसमें आपके आंसर्स भी आपको क्वेश्चंस के दिए जाएंगे और टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। 4 स्किल्स में हमने क्या क्या करना है। हमने रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग को कवर करना है। ओके, मिस्टर मोहम्मद बलाल सेज दैट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो है वो मेंशन नहीं हुए। सो मिस्टर बलाल यू आर वेलकम। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, राइट। वैसे जो ग्रामर है वो काफी बोरिंग होती है, isn't it so? जब हम ग्रामर के डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में स्टडी करते हैं या हम टेंसेस पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वी जस्ट गेट दिस इज सो बोरिंग एंड इट इज सो टफ। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम इस कोर्स में टेंसेस भी करेंगे, एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एंड एवरीथिंग दैट यू वांट टू स्टडी, और उसको हम इंशाल्लाह कंफर्टेबली रिलैक्स होकर डिस्कस करेंगे। एवरीथिंग विल बी क्लियर। आपके ये 4 स्किल्स कवर होंगे। टेंसेस हमारे 12 होते हैं और उसमें हम मेनली
पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो है वो स्टडी करते हैं. सो आई विल एक्सप्लेन ऑल द 12 टेंसेज. जो हमारा सबसे बेसिक टेंस है वो है इनडेफिनिट टेंस, क्योंकि सिंपल टेंस है. इससे हम स्टार्ट करेंगे ताकि आपको रीजन सिंपल इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करने का इसलिए क्योंकि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेंस इज इनडेफिनिट टेंस, दैट इज योर सिंपल टेंस. इसको हम कॉमनली डे टू डे रूटीन में यूज करते हैं. सो यू हैव टू, व्हेन यू हैव टू कम्युनिकेट विद समवन, व्हेन यू हैव टू राइट समथिंग, commonly used tenses indefinite tense. So we are going to do all the tenses, but ये हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे. और इसको स्टार्ट करने का एक और रीजन ये है कि हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे, हम इजी से स्टार्ट करेंगे ताकि आपके लिए जो लैंग्वेज है वो एक बर्डन ना बने. कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये हमारे 4 टेंसेस हैं बेसिकली. आगे इनका ब्रांच आउट हो जाता है, टोटल 12 बन जाते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ. पंक्चुएशंस हैं, बहुत सी पंक्चुएशंस हैं. एक आपका सेशन पंक्चुएशंस का फुल फ्लेज प्रिपेयर्ड है. हम फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क को डेली बेसिस पे सब असाइनमेंट्स में फोकस करेंगे. कैपिटलाइजेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जब एक रिटन कंटेंट करते हैं, व्हेन यू राइट समथिंग, कैपिटलाइजेशन जो है एक बहुत कॉमन मिस्टेक है. हमें लगता है कैपिटलाइजेशन तो बड़ा आम सी सिंपल सी बात है. नो, इट्स नॉट सिंपल. व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, व्हेन आई विल चेक योर असाइनमेंट्स, व्हेन आई विल गिव यू द फीडबैक, यू विल सी कि कैपिटलाइजेशन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है. vocabulary and pronunciation. So we'll be covering all these things. I'll be sharing vocabulary with you. You will get lists of words in जो भी हम टॉपिक करेंगे, मोस्टली सब टॉपिक्स के आपको साथ जो है vocabulary मिलेगी. pronunciation आपकी स्पीकिंग असाइनमेंट्स में कवर होगी. Okay, so what is the importance of English language? If I talk about myself, I have 10 years teaching experience. In 10 years में I have come across a variety of students, age, then profession. Some were students. They are from different backgrounds, culturally, socially, academically, religiously. Like religion is not something that we count, but I'm telling you that the people that I have been teaching, the students, they've come from different backgrounds. उसमें मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, and what I've observed is that there are two kinds of students. One student is, or one person is, who has a very strong English, by which I mean that the structures are strong, the vocabulary is high and fancy, and that person is able to communicate, that person is able to have, like, he has strong English language skills. But when he comes to communicate, he's not able to convey his message. Why? आप किसी, for example, आप एक shopping center में जाते हैं और वहाँ पे आपने कोई product, you have to buy something, right? And there are two persons standing over there who are there to provide you with the information related to that product. आप एक बंदे के पास जाते हैं और आप उसे कहते हैं कि जी इस product के बारे में बता दें. The person has a strong command over the language, but unfortunately, he is not able to convey the message. वो आपको ऐसे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में कि आपको आइडिया नहीं हो रहा, आप यू आर नॉट सेटिस्फाइड इन द एंड. ओके, बट देयर इज अनदर काइंड ऑफ पर्सन, there is another kind of person who has basic content. Miss Nida, you need to please check, sign in again. So there is another kind of person who is who doesn't have a strong language. Basic structures हैं, बिल्कुल simple vocabulary है, और even some of the sentences are broken. But even after the session comes to an end of the speaking or writing session that I have been taking, what happens is by the end of the session, the good point is that skills polish हो गए हैं, and the best part is that he's able to convey his message. यहाँ पे मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ कि it is not important that you need to have a high vocabulary, a fancy vocabulary, high structures and complex structures. और मैं ये भी आपको नहीं कह रही कि आपके पास ये structures और high fancy vocabulary नहीं होनी चाहिए. Yes, you have to improve and you have to grow your language, but the important baseline message is कि आपको English जो आती है उसका main purpose ये है that you are able to convey your message, either in the speaking skills or in the writing skills. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास language
का जो मटेरियल और कंटेंट है वो बड़ा अच्छा होता है, but unfortunately they are not able to convey their message. But there are some people who have basic English skills, but when they come to communicate, उनको अपना message convey करना होता है. They know that what they have to say and how they have to say it. So हम यहाँ पे लैंग्वेज को इम्प्रूव करेंगे, अपने स्ट्रक्चर्स को पॉलिश करेंगे, और we are going to practice so much that you will be able to convey your message in the end. That is the main thing that you have to keep in your mind, because English is not our language. It is not our mother tongue. What we have to do is that we have to practice. We have to listen to the native English in order to speak as clearly as we can. और हमें उनको जिस तरह एक नेटिव स्पीकर बोलता है, हमने प्रैक्टिस के साथ उसके करीब तर जाके अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है, इतना कि the way the words are being pronounced, you are able to pronounce them in a way that they are easily understandable. The structures that you have to practice, you are able to convey your message in a clear, meaningful way. So this is what is important. Either you are learning English or you are playing a piano, there is a secret behind it. There are some people who keep learning and learning and learning, but by the end of the session, by the end of the practice, by the end of the struggle, they stay where they are. इसके पीछे एक रीजन होता है, वो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ. आपने इस पॉइंट को अपने माइंड में रखना है, and today when the session comes to an end, I want you to think about this. That when you're learning something, there has to be a secret, there has to be a tool that you have to practice. This is the secret. Okay, whatever you have to achieve in life, whatever you have to gain in life, there's always something that is important, and that something is your attitude. ये point यहाँ पे जो write हुआ है, I'm sure that most of you are able to understand this point. Your attitude either makes you or your attitude breaks you. Today, you have to keep this in your mind. There are two things that you have to keep in your mind. First of all, you have to prepare yourself and you have to say that, yes, I can do it. Everything in life has ups and downs. English language का जो process है, जो learning का process है, वो एक दिन का नहीं है, ना ही वो कुछ दिन का है. It is a gradual learning process, और इसमें आपका attitude जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा help करेगा. You just have to believe in yourself that yes, I can do it. It is slow. Sometimes it will be difficult. Sometimes it will be boring. Sometimes the pressure will be too much. Sometimes you'll say, no, I don't want to study it. I'm just bringing an end to it. But still, if you have that persistence in you, if you have the patience, if you know that, yes, I have to achieve my goal, you'll do it. Okay. So, and the second thing is that please don't be afraid of English language. हम सबको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक मॉन्स्टर है जो हमारे पीछे भागता हुआ आ रहा है और हम सब उससे भागते हुए जा रहे हैं. ठीक है. I can see the monster coming and I'm just running away. I don't want to learn English. I don't want to practice English. It is so difficult. I don't want to do that. Why? Because this is your thinking. This is your thought. So you have to keep a positive attitude, and you're going to improve, right? Keep a positive attitude. And just believe in the fact that yes, it is true, and yes, it is possible, and I am going to improve my language. आज से आपने इस चीज को अपने माइंड में रखना है. इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए मैं एकदम से आपको लैंग्वेज में जंप नहीं करवा सकती, ना ही मैं आपका ब्रेन जो है उसको ओपन करके अंदर लैंग्वेज को पोर कर सकती. दिस इज नॉट पॉसिबल. What you have to do is that you have to prepare yourself mentally and physically, and you have to say that yes, I can do it. It is a gradual process. It will take time. But with practice, everything is possible. And एक बात, जो ये जो fear है, ये जो खौफ है, अभी मैं आपको कह रही हूँ कि आपने डरना नहीं. आप कहेंगे ये कैसे possible है? Possible ये इसलिए है, being human, आपके अंदर different emotions होते हैं, feelings होते हैं, feelings of happiness, feeling of sorrow, feeling of sadness, खौफ, डर, ये कैसे होगा, ये हो सकता है या नहीं. आप अपनी फीलिंग्स को कभी खत्म नहीं कर सकते. द ओनली थिंग यू कैन डू इज दैट यू कैन कंट्रोल योर फीलिंग्स. यू हैव टू कंट्रोल योर फियर. If you want to achieve something in your life, you have to control your fear, you have to control your emotions, and you have to believe that yes, it is possible. I hope that this point is clear.
So inshallah, by the end of the session, this crybaby and this child who is so much afraid of English language will become this, isn't it so? So we are on the way towards learning English and we'll turn this confident. आज हम सब डर भी रहे हैं and we are afraid. I don't know what will happen, what we are going to do in the course. But with practice, inshallah, this is what we are going to become, right? So this is a message for all of you that be hopeful and stay positive and look at your attitude. That is extremely important. So I'm going to give you an idea about what basically we're going to do in this course. English grammar jo hai, when you look at English grammar, what is English grammar basically about? इसमें कुछ set of rules होते हैं. There are certain rules that we apply or we use in order to speak, write in a fluent and accurate way. अभी मैं आपको बताऊंगी कि fluency और accuracy का क्या मतलब होता है. Secondly, जो rules होते हैं उनको हम use करते हैं अगर आपकी grammar अच्छी है, अगर आपकी grammar पे एक basic command है, whatever you'll read and whatever you're going to listen to, you will be able to understand it. Grammar हम उस हद तक focus करते हैं grammar पे. We have to look at the grammar books only to that extent where your basic English is correct, it is understandable, you know that how you have to construct a sentence and how you have to connect sentences together and make them meaningful. This is the purpose of grammar. Don't think that everything is grammar. आपने अगर लैंग्वेज को इंप्रूव करना है तो आपने लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग पे इन्फ्लुएंस करना है, उसको प्रैक्टिस करना है. ये आपका एक साइड पे ग्रामर है जिसको आपने टच करना है जहां जहां आपको प्रॉब्लम्स होंगे. दिस इज द रियल वे टू इंप्रूव द लैंग्वेज. सो इन रूल्स को हम यूज करते हैं वर्ड्स फॉर्म करने के लिए. वर्ड्स आर नॉट एनफ, वी हैव टू अरेंज द वर्ड्स इन अ सेंटेंस. आप सेंटेंस में एक वर्ड्स को अरेंज करते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट एनफ. व्हाई? बिकॉज सेंटेंस में आपने वर्ड्स को ऐसे थ्रो नहीं कर देना, ये नहीं कि मैंने वर्ड्स ऐसे थ्रो कर दिए और सब कुछ समझ आ गया. नो, you have to bring a correct order in each and every sentence. This is what we are talking about. और उसका end result क्या होगा जब sentence order में आ जाएगा? यही बात मैं भी पहले कर रही थी. The main thing is that you have to convey a complete and correct meaning. Even if you make a simple sentence and the other person is able to understand what you're saying, the work is done. So हमने English language को इस purpose के लिए improve करना है, ठीक है? Well, it's already read and it's already underlined. Right. Now we have 4 English language skills: reading, writing, listening, and speaking. And they are basically divided into 2 categories. ये मैं आपको idea इसका इसलिए दे रही हूँ so that आपको पता हो कि language skills होते क्या हैं. What are we basically looking at? हमारे English language skills जो हैं वो productive और receptive होते हैं. Productive का क्या मतलब है? Productive means to produce. Productive means output. Productive means when you have to give an output of something. So you produce in 2 skills, and these 2 skills are speaking and writing. Speaking skills जो है वो basically आपका what do you do in the productive skills? When you speak, your thoughts with the help of understanding convert into words and you produce them. Understanding की हेल्प से आप मीनिंगफुल सेंटेंसेस बना के बोलते हैं, just the way I'm trying to speak, and you're able to understand because with the help of my understanding and practice, I'm able to make meaningful sentences. My words are being produced and you're able to understand. Writing में क्या होता है? Writing skills is also productive skills because we think with the help of our understanding, we convert our thoughts into words and then we produce them. ये एक बेसिक मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ कि प्रोडक्टिव स्किल्स और रिसेप्टिव स्किल्स इनको कहते क्यों है, क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ थॉट्स इनटू वर्ड्स. रिसेप्टिव स्किल्स, द वर्ड रिसेप्टिव मींस टू रिसीव इनपुट. You get something. So what you get, you pick up words, you're looking at the screen and you're reading it. On the slide, there are certain words. आप इनको read कर रहे हैं. Words को read करके with the help of understanding, they convert into thoughts. एक thought process चलता है और आप understand कर लेते हैं. Listening is again a receptive skill because you are listening to what I'm speaking. With the help of your brain, understanding ये words जो मैं बोल रही हूँ, they are being converted into thoughts and you're able to understand. But the best part over here is that you've taken the first step. Do you know how you've taken the first step? You've taken the first step of improving the English language because you are able to understand all the 4 skills.
So you should congratulate yourself and you should pat yourself on the back कि इस course में आपने admission लिया है. You're not blank. You're able to understand English language. So you're moving forward from here in order to have a more command over the subject, right? अब grammar का role क्या है हमारी language में? आप इस example को यहाँ पे देख सकते हैं. Let's eat kids. Let's eat, comma kids. अब पहला जो sentence है वो ये कह रहा है कि आए हम बच्चों को खा लेते हैं. Really? आप बच्चों को खाएंगे? No. So this is an incorrect sentence. Let's eat, comma kids. ये एक पंक्चुएशन की एग्जांपल यहाँ पे है, लेकिन इस पंक्चुएशन के यूज से हमारे पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया. आपने इसमें जो वर्ब यूज किया है ईट, जैसे आपने सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन की है, दैट इज मीनिंगफुल एंड अंडरस्टैंडेबल. इसमें इसके सारे एलिमेंट्स यूज किए गए इन ऑर्डर टू मेक इट क्लियर एंड मीनिंगफुल. सो this example basically over here is just to make you understand the importance of grammar and how you have to make meaningful and correct sentences. Now, what is language? Language is basically any new language that you learn basically opens doors for you into a new life, into a new world, a world of opportunities. So why do we believe that English, why do we believe that any language, over here, of course, we are talking about English, you learn, it becomes a new life for you? Because it opens doors and it opens horizons and it opens a new window of opportunities and options for you. There are choices that come in front of you. The world of communication opens. You get to find more roads that you can travel on in order to gain what you're looking for. आप अपने goals achieve कर सकते हैं. आपके लिए दुनिया जो है वो और ज़्यादा vast हो जाएगी the day you're able to speak, read, write and listen English in a more fluent and accurate way. Why is a new language a new life? Because it is an international language. English will make you successful, and this is the most beautiful sentence when we say that the world becomes a smaller place to live in. दुनिया छोटी हो जाती है. Let's see what are the reasons, what are the ways that make the world a smaller place to live in when you're able to speak English. Why do you want to learn it? Why do you want to be fluent and accurate in English? Because you have better business and job opportunities. आप भी options share कर सकते हैं chat box में. What do you think when you learn English? What is it that you're going to achieve? If you are thinking about doing some kind of business at national or international at national or international level, or you're looking for job opportunities, English, if it's in the palm of your hand, you can do anything, you can achieve anything. So job opportunities hain if you look at different options, I have two coming in my mind. ये जो Samsung है और Apple है, if you get to know कि यहाँ पे English जो है वो mandatory language है. If you have to do job in these areas, you need to have a strong command over the language. This is just an example. Traveling becomes convenient for you. You can travel anywhere in the world. International communication, wider access to knowledge, journals, books. We all know that 90% more than that of the content is found in English language. Access to a world of entertainment. आपके लिए entertainment के जो options हैं वो open हो जाते हैं. Loads of content in English language is found on YouTube and Netflix, and I mean to say that anywhere if you get to find a movie, you will find it in English. So international communication, either you can sit and study from the comfort of your home, or you can go anywhere in the world if you are strong in your language. Or secondly, the best part is that if you go for online earning, there are so many options where you can earn online. We have so many online platforms where there is a strong command over English language. You will just start earning in dollars, isn't it so? So this is the reason we have to improve English language, and I would inshallah make it possible for you, and you will learn it, you will improve. Fluency and accuracy. जो fluency होती है उसका मतलब ये होता है कि आप easily और quickly in a smooth way अपना message जो है वो convey कर देते हैं, ठीक है? Accuracy होती है that you are able to speak or write correctly without any mistakes. Fluency, इसके लिए मैं आपको एक example दे देती हूँ. For example, if you ask a child, a small child, you give him a jug and a glass, और आप उसे कहते हैं कि जी ग्लास में जो है ना पानी pour करें.
पहले दिन वो पहली दफा जब पोर करने की कोशिश करेगा तो शायद जग गिर जाएगा या पानी ऐसे ऐसे होगा और जग ग्लास शायद गिर जाए और ही विल से दैट नो आई कैन नॉट डू इट। कुछ देर बाद या नेक्स्ट डे आप उनको फिर पकड़ाएंगे तो वो जो है थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर बाहर गिरा देंगे और फिर छोड़ देंगे। फिर आप दोबारा ट्राई करेंगे, आप उनसे कहेंगे लेट्स ट्राई इट अनदर टाइम एंड यू हैव टू बी पेशेंट इन दिस। जब आप उनसे पानी डलवा रहे हैं, योर एटीट्यूड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो थर्ड और द फोर्थ टाइम व्हेन ही इज गोइंग टू पोर, शायद आधा डल जाएगा फिर बाहर गिर जाएगा। Fifth or sixth time or maybe 10th or 20th time when he is going to pour the water, तो वो पानी जो है बड़ा smoothly जग से ग्लास में जाएगा and he'll have a strong grip over the jug and the glass will not fall. And by the end, in a minute or two, or maybe he'll still take time because he's a child, we have to respect him for that. So he's going to pour it and then he'll drink it on his own independently. So what does this show? This shows दो बातें हैं। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज जो आपने लर्न करनी है वो भी इसी तरह ही है, गिरेंगे हम, उठेंगे, फिर हम उसको सीखेंगे, इट विल टेक टाइम। सेकेंडली फ्लुएंसी का यहाँ पे मतलब समझ आता है कि जब एंड पे पानी स्मूथली जग में जा रहा है, इसी स्मूथनेस से, इसी फ्लो से जब आप इंग्लिश बोलते हैं उसको फ्लुएंसी कहते हैं। व्हेन यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश इन अ क्विक स्मूथ वे, फ्लूइड की तरह, द एबिलिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ इजिली, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपना पॉइंट, दैट इज कॉल्ड फ्लुएंसी। एक्यूरेसी हमेशा ग्रामर से रिलेटेड होती है क्योंकि आपने उसमें एक्यूरेट करेक्ट सेंटेंसेस बनाने विदाउट एनी मिस्टेक, राइट? सो दिस इज फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी। आई होप इट इज क्लियर। सेंटेंस स्ट्रक्चर हम फोकस करेंगे जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये आपका बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है और ये सेशन 2 से ऑनवर्ड सेशन 30 तक इतना रिपीट होगा कि आपको सब पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी अभी मैं आपको आगे थोड़ा सा आइडिया दूंगी। So this is basically the these are the three aspects of a sentence that make a complete sentence. And we will study verbs so much. You will get lots of lists of these, how they're used in a tense, what are the types of verbs, आपने tenses को कैसे use करना है, everything will be clear. मैं आपको अब English language समझा के और पढ़ा के इस session को end करूँगी, right? I'm going to give you an assignment, but before that, I'm going to give you a demo over here. आपने एक असाइनमेंट राइट करनी है जो कि है मेमोरेबल ट्रिप। इसमें आपने अपनी मिस्टेक्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, मिस्टेक्स को आप पॉजिटिवली कंसिडर करें। इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, बी कॉन्फिडेंट, यस आई एम मेकिंग मिस्टेक्स एंड आई एम गोइंग टू इम्प्रूव विद द हेल्प ऑफ दीज मिस्टेक्स। जब हम शेयर करेंगे असाइनमेंट्स और मैं आपकी करेक्शंस करूंगी, सो जस्ट बी ग्लैड कि आपको उनकी फीडबैक मिल रहा है, राइट? सो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देने लगी हूँ। अभी यहाँ पे मैं आपके सामने राइट करूंगी। इसी तरह का ही आपने कंटेंट जो है वो होमवर्क में, असाइनमेंट में राइट करना होगा, लेकिन प्लीज अवॉइड करना है कि इसको आपने कॉपी नहीं करना, ठीक है? यू कैन लुक एट दिस ऑफ कोर्स, और आप इंटरनेट पे भी एक मेमोरेबल ट्रिप से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, देन यू कैन राइट अबाउट इट इन योर ओन वर्ड्स, नो कॉपी पेस्ट। सो इफ आई राइट दिस, last year I went to northern areas with my family. It was an amazing 3-day trip. We went by car. The weather was chilly and comfortable. I enjoyed the natural beauty. It is the most memorable trip of my life. जनरली आपने इस तरह के कुछ सेंटेंसेस राइट करने हैं। अभी मैं आपकी क्योंकि हम दिस इज फर्स्ट डे, द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू राइट एंड आई विल जस्ट सी कि आपको किस तरह की इंप्रूवमेंट की जरूरत है इंग्लिश लैंग्वेज में, ऑल द स्टूडेंट्स। सो जस्ट डोंट बी अफ्रेड, जस्ट राइट एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पे आपके लिए राइट किए हैं। आपने जस्ट 5 सेंटेंसेस राइट करने हैं अबाउट द मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप ऑफ योर लाइफ, और इसमें से आप कोई से भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं उस ट्रिप को डिस्क्राइब करने के लिए। ये भी हो सकता है कि आप यही वर्ड्स यूज कर लें, या फिर आप अपने डिक्शनरी से सर्च करके या इंटरनेट से सर्च करके और कुछ वर्ड्स जो है वो यूज कर सकते हैं। व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज कि आप एक पेपर के ऊपर राइट करेंगे
with a dark blue pen or a dark black pen, और राइट करके आप उस पिक्चर को उसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, ब्राइट सा स्क्रीनशॉट. देखिए मेरी स्क्रीन आपको ब्राइट एंड क्लियर नजर आ रही है, इस तरह की एक ब्राइट स्क्रीनशॉट होना चाहिए जिसमें मुझे सब वर्ड्स जो है वो क्लियर नजर आ रहे हो. उस स्क्रीनशॉट को आपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देना. राइट, वेरी सिंपल. सो ये आप राइट करें और स्क्रीनशॉट लें और आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें. You can do it right now after this session. You can do it tomorrow, and before tomorrow's session, second session, please submit your assignment so that you can get feedback. और आपको पता चल जाएगा कि आपको किन आपके areas of improvement क्या हैं और हमें कहाँ work करना है. सही है. So you can either take a screenshot of this assignment, and after I think 10 o'clock मैं आपको इस assignment का एक screenshot WhatsApp में भी send कर दूँगी. So thank you so much for being a part of the session. Yes, Mr. Bilal, you can make the assignment in the Microsoft Word as well. Not a problem. Take a clear screenshot. Typing जब आप कर रहे होते हैं उसमें errors जो हैं वो आपके कंप्यूटर खुद correct कर देता है. So इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप एक notebook पे write करें. Handwritten assignment करेंगे तो आपको पता होगा कि आपको कितनी improvement की जरूरत है. But then again, if you want to write it in the Microsoft Word, please take care about this space in between the words or take a clear screenshot. So thank you so much for being a part of the session. It was a pleasure having you. I hope that the first session has been informative. Please share your feedback in the Facebook, in the WhatsApp group. And inshallah, from tomorrow onwards, we'll start the topics. We'll start covering English language. If you have any confusion related to today's session, you can throw in your messages in the WhatsApp group. And I'm going to see you tomorrow in session 2. Take very good care of yourself, and thank you very much for being a part of this session, which is specially for you.